हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है यूबिक्विटी एकेडमी। मेरा नाम है डॉक्टर दिव्यांक। दिस चैनल इज मेड फॉर accumulating cutting edge knowledge and conveying it to all dear friends and everybody who wants to learn। पहले हम इसमें कवर करेंगे स्कूल का सिलेबस एंड देन we'll also talk of entrance exams, उसकी प्रिपरेशन, उसका सिलेबस, उसकी स्ट्रेटेजी एंड देन वी विल ऑल्सो टॉक इन द लेटर स्टेजेस अबाउट द रिसेंट हैपनिंग्स इन द रिसर्च वर्ल्ड। कैसे हमें अपने आप को साइंस के साथ अपडेट रखना है, हम वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करते रहेंगे साथ ही साथ। पहले हम शुरू करेंगे बायोलॉजी से। और अगर आपको बायोलॉजी मुश्किल लगती है, या टेक्निकल लगती है, या आपको कॉम्प्लेक्स लगती है, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही रट्टाफिकेशन है, तो मैं आपको गलत साबित कर दूंगा। बात यह है कि बायोलॉजी को ऐसे पढ़ा जाए कि वो इतनी इंटरेस्टिंग लगे कि हमारा खुद का उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और हम उसको खोज खोज के ढूंढ ढूंढ के पढ़ें। एक बार अगर बायोलॉजी का चस्का लग गया तो फिर वो हटने से रहा। तो हम इसमें शुरू करेंगे क्लास 9 की बायोलॉजी से। और क्लास 9 की पहली सफलता की कुंजी होगी अगर हम उसका बेसिक समझें, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो लेट्स बिगिन। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? फंडामेंटल मीन्स सबसे बेसिक चीज। जब फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट जिससे कोई भी चीज बनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल यूनिट अगर हम बोले एक वॉल की, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ वॉल? तो दैट मीन्स अ ब्रिक इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ वॉल, क्योंकि एक दीवार जो है एक ईंट ईंट करके बनी होती है। सो अगर आप दीवार का पेंट प्लास्टर हटा के देखेंगे तो वो एक दीवार जो है एक एक ईंट से बनी हुई है। सो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ wall becomes a brick. Now similarly, if you say that for what is the fundamental unit of any compound, so any compound, whichever compound or material you see outside, which is non-living object, the fundamental unit of that object or material or compound is an atom. So atom becomes an fundamental unit of a material or a non-living object. So similarly जब हम life की बात करते हैं, when we talk of life, what is that fundamental unit? So life की वो fundamental unit क्या है? So this is what Robert Hooke, this person Robert Hooke, a scientist in 1665, what he did was he saw a piece of cork. Cork means जैसे जो cork आपकी वाइन की बॉटल्स पे लगी होती है, it comes from the bark of a tree. So वो जो bark of tree से cork आता है, that he made a slice of and then उसको एक microscope के नीचे देखा. So why did he see that? Why did he do that? He wanted to check whether what is this thing made up of. अगर इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, so what is that it is made up of? What he saw was that it is this pattern which was visible to him. So this pattern which you see, which he recorded in his observations in his book, which was known as Micrographia. So he published this book in 1665 and he saw that this cork which came from the bark of the tree is made up of tiny, tiny boxes. And that is why he called these tiny boxes as cell. तो सेल क्या होता है? सेल एक वो चीज है, किसी भी बॉक्स, फॉर एग्जांपल आप सेल फोन को सेल फोन क्यों कहते हैं? बिकॉज दैट इज अ सेल, इट इज काइंड ऑफ अ बॉक्स शेप्ड थिंग। फॉर एग्जांपल जेल को भी कभी कभार सेल कहते हैं, दैट ही इज इनसाइड अ सेल, सो दैट मीन्स इट्स ऑल्सो अ बॉक्स शेप्ड थिंग। सो एनीथिंग विच इज रिजेंबलिंग अ बॉक्स, वहां से वर्ड आया है सेल। नाउ सो ही कॉल्ड दीज tiny boxes which are a repeated pattern inside any living object. So he was the first person to see what are living objects actually made up of, which are the basic units of life which any living object is made up of. Now what is important is that in order for him to see this, there was important that he had a microscope, something which could generate large or huge or magnify the image or magnify something which he wants to see, because we cannot see cells with the naked eyes. So
if the discovery of microscope would not have happened, he would not have been able to see these kind of pattern which he saw from the cork, that is the bark of the tree, and this kind of pattern which he called as that bark of tree or living objects are made up of cells. So then therefore he said this in his book Micrographia, that the living objects are the cells are the basic unit of life. So what we can say is that all living things are made up of at least one cell. एक सेल से कम, मतलब कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी लिविंग ऑब्जेक्ट का अभी एग्जांपल लेंगे तो कम से कम एक सेल उसमें होगा ही होगा. सो सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सो लाइफ मतलब जिंदगी की बेसिक यूनिट क्या है, जिसको हम बोलते हैं कि लिविंग ऑब्जेक्ट है. सो लाइफ, लिविंग ऑब्जेक्ट वर्सेस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. सो लिविंग ऑब्जेक्ट का सबसे बेसिक यूनिट है लाइफ. इट इज मेड अप ऑफ सेल्स. So all cells come from pre-existing cells. So we cannot at this moment make any cell artificially. Of course, scientists are trying now to make artificial cells, but all the cells come from pre-existing cells. So cells reproduce, they divide, and they become two cells. One cell become two cells become four cells. So this is how cells, one cell comes from a pre-existing cell, right? So Robert Hooke was the first one who coined the term cell, and he observed the cork under a compound microscope. So this is the microscope, which this picture has been taken from the book NCERT book. That this is a basic, diagram of how a compound microscope looks like. So this is eyepiece from where you observe, and this is where you place your sample. This place is where you keep your sample, that is slides. And these are your objective lens. This is objective lens and this is eyepiece. And this is the mirror from which light can be focused onto the sample. So this is a mirror from which light can fall onto it, and yahan se it can focus on the sample. So when the proper light comes and there is a focus which is made because using objective lens. Objective lens की power अलग अलग हो सकती है, 10x, 50x, 100x. So now using this objective lens, you can increase the magnifying power of what you are observing. So this is the objective lens. So what happened? This is what we were talking in the previous slide, that microscope invention made all this possible. If microscope invention did not have happened, so this discovery of cell would not have occurred. Now, who discovered the first microscope? So Hans and Zecharis Janssen. This is a pair of father and son. So ये father and son थे जिन्होंने first microscope बनाया, फिर गैलीलियो ने उसको improve किया, and then Robert Hooke was the first person in 1665 when he observed that the cells for the first time. So remember, रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स ऑब्जर्व किए, दीज वर द डेड सेल्स, बट एंटोन लीवनहुक उसके बाद आए इन 1670s. पहले 74 में देखा, फिर 76 में देखा. सो ही वाज द पर्सन, द साइंटिस्ट हु इन दैट टाइम 1670s, you can imagine just how many 300 years ago all of these things were happening, that people were observing, that he was the first person to observe the living organism under a microscope, right? So now this is what we also discussed, that every living organism is made up of cell. कोई भी living organism उठा लीजिए, whatever living organism, there is no exception to it, that any whole organism can be made up of just one cell. एक सेल से भी बने होते हैं, and इनको हम कहते हैं unicellular organisms. So these are called unicellular. Uni means one. So any living organism which is made up of one cell is known as unicellular organism. So उसके क्या examples हैं हमारे पास? Amoeba is one example. Chlamydomonas is another example. This is again unicellular or one-celled organism. Then there is an organism known as paramecium. Then something known as yeast. Yeast is जिससे फर्मेंटेशन होती है. बहुत जगह बहुत लोगों ने सुना भी होगा yeast, जिससे आप जो यूज होते हैं फर्मेंटेशन में, बियर बनाने में, जहां बहुत सारी चीजों को फर्मेंट करने में. सो ईस्ट इज यूटिलाइज्ड इन दैट. नाउ opposite or in contrast to unicellular organism, there is a
category of organism which are multicellular organism. So now multicellular means, as the name suggests, there are multiple cells, many cells, or 2 cells, 3 cells can also be there. So there are multicellular organisms which although come from single cell only. सबसे पहले अगर multicellular organism भी है तो वो single cell ही होता है, उससे multicellular बनता है. कोई भी ऐसा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है जो सिंगल सेल से ना बनता हो. सो सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी बट डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी. नाउ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है that there are multiple different cells, and different cells have been divided into different they have been given different functions. Now imagine let's have an example of a company, Google. So Google is one company. So it's a huge company, but what is the fundamental unit of Google? The team of Google, people who are working on Google, or the Google as a team. So fundamental unit of Google is a human being. A human being is the fundamental unit of a Google, right? So lekin there are like lakhs of employees working in Google, but what's happening is all of them are humans, but they have divided them into different departments. So now let's assume different departments are different organs. So different organs, now those different departments, एक हो गया HR department जो hiring करते हैं, hiring department. एक हो गया coding department, the people who write codes. Then there is a department who takes care of the business, so that becomes a separate department. Now within those departments of the hiring department, उन्होंने अपने department को अलग अलग teams में बांटा हुआ है. So those are अलग अलग teams कि like ये इस field की hiring देखेंगे, ये सिर्फ सैलरी का देखेंगे. देन बिजनेस टीम को कैसे, डिपार्टमेंट को कैसे डिवाइड किया है, देन दे विल से दैट ओके फाइन यू विल लुक ओनली एशिया का रीजन का बिजनेस देखेंगे, एंड देन देयर इज अ डिवीजन दैट ओके फाइन आप सिर्फ मिडल ईस्ट का बिजनेस देखेंगे, देन आप सिर्फ यूएस का बिजनेस देखेंगे. सो देन दे हैव डिवाइडेड इनटू टीम्स. सिमिलरली उसी एग्जांपल को समझ, नाउ इसके ऑपोजिट एक और एग्जांपल है, एक शॉपकीपर, वो भी बिजनेस कर रहे हैं शॉपकीपर, गूगल इज ऑल्सो डूइंग बिजनेस, बट दोनों में बहुत फर्क है. शॉपकीपर में अकेला ही इंसान है, दुकान है भाई, अकेला बैठा है, सो उसने अकेला अपना काम चलाया. सो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एक सेल यूनिसेलुलर, ही इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म. और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो व्हाट हैपेंस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो हमने गूगल के एग्जांपल से समझा, दैट multicellular organisms, they will be divided, there will be different organs, but all of these things will be made up of cells only. So different cells have been given different functions. So there is a division of labor. So there is a heart organ, then there is liver, then there is kidney, then there are neurons, brain cells. So within the organ, then there are multiple tissues. जैसे आप पता होगा लिवर एक ऑर्गन है, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल टिश्यूज हैं. सो एंड देन मल्टीपल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स ओनली, बट उन सब सेल्स को डिफरेंट फंक्शन मिला हुआ. अल्फा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, डिफरेंट सेल्स जैसे न्यूरॉन्स होते हैं, और ग्लायल सेल्स होते हैं ब्रेन में, अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स होते हैं. सो सबके फंक्शन अलग हैं. सो देयरफॉर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, it is a division of labor, it is made up of multiple cells. All of the organisms, whether unicellular or multicellular, they are made up of cells only. लेकिन सबको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल्स को अलग अलग कैटेगरी डिपार्टमेंट दे दिए, ऑर्गन्स में बांटे, सो दैट दे कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. नाउ ग्रुप, सो दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग, दैट ग्रुप ऑफ सेल्स, अगर ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाए तो वो बनाता है टिश्यूज, एंड देन फ्रॉम टिश्यूज बिकम अ ऑर्गन. So if multiple tissues come together, it becomes an organ. So how do multicellular organisms come from a single cell? जैसे हमने बात करी, कोई भी multicellular organism होगा, पहले वो single cell ही, it is a single cell in the very beginning, and from the single cell only multicellular organisms they come out. How do they come? Because single cell will divide and it will form two cells will become 4 cells, 4 will become 8, 16, or 64, something like this sort, and therefore the cells divide to produce their own kind. So cells की जो reproduction होती है, जिसको division बोलते हैं, it's highly accurate. So जो cells होते हैं, they will, if this is this kind of cell, it will make that kind of cell only. Now, so different, for example, this is what we
जस्ट टॉक, ये जस्ट एक कार्टून से समझते हैं. सो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड देन देयर इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. नाउ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एक खासियत है, पहले यूनिसेलुलर की बात करते हैं, सिंगल सेल की, दैट इट कैन ईदर बी प्रोकैरियोटिक, राइट, और इट कैन ईदर बी यूकैरियोटिक, राइट. सो विल अंडरस्टैंड इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है. लेकिन मल्टीसेलुलर की जब हम बात करते हैं तो इट इज ओनली यूकैरियोटिक, राइट. सो कौन कौन से एग्जाम्पल है इन द यूनिसेलुलर विच आर प्रोकैरियोटिक? बैक्टीरिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक. सो बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड इट इज प्रोकैरियोटिक. नाउ इन यूनिसेलुलर what are the eukaryotic? Amoeba, this is amoeba, this is eukaryotic, this is chlamydomonas, this is also eukaryotic, this is paramecium, this is also eukaryotic, but these are single cell, this is unicellular. So but in case of multicellular these are only eukaryotic. So humans हो गया, fungi हो गया, plants, animals, insects, all of these are multicellular and they are eukaryotic. So like I said, these are of different kinds and different shapes. So if you see that these are red blood cells which are round and flat shaped. That, but what is the reason that these are like? Because they have to transport the oxygen. So jitna surface area zyada hoga, so they will be able to carry the oxygen that much. So there is a reason that they are round and flat shaped cells. And then these is sperm cell. This is its function is it has to be highly motile. If it cannot move, then it will not be able to do its function. Then these are muscle cells. Muscle cells are elongated cells. If you see, these are muscle cells. These are elongated because the basic function of any muscle is to contract. So if this elongation of the cells helps in the contraction of the muscles. Then you see that neurons are branched, elongated and branched cells. For example, if you see, this is a nerve cell. So this is a nerve cell. Why this is long and branched? Because it has to transmit the signals. Communication करना है. So दूर दूर तक different parts में signal transmit करना है, relay करना है. So therefore nerve cells are elongated, and so the point being that different cells have different shapes and different functions. There are cells like amoeba because it is unicellular. Amoeba is unicellular, like we discussed. So it keeps on changing its shape. It is flexible in its shape. It can change its cell shape, and therefore it can perform many functions which is required for its survival. Then there are nerve cells which cannot change. Once decided nerve cell ka shape, it cannot change its shape. Whatever shape it during the process of development usko jo shape mil jata hai, it remains the same, right? Now, so this is what we discussed. There is a division of labor in the multicellular organisms. So जितने भी multicellular organism होते हैं, which are made up of different cells, there is a division of labor which we understood by the example of Google and a shopkeeper. In, for example, again उसको हम repeat करते हैं. Google में there are multiple departments. Different departments are divided into different teams, right? So different departments are divided into different teams, but all of these departments, what is the fundamental unit of all these departments? It's a human being. So if every human being is working in the Google, similarly, if we take example of a shopkeeper, only one person is required to run a shop, but that is also a human being. So similarly, अगर हम उसको biology के context में देखें, a unicellular is one cell, which means that one cell is also sufficient to live. Then there are multicellular organisms also. They are also living beings. But in multicellular, they have divided their function amongst themselves. So, जैसे फुटबॉल की टीम होती है, फुटबॉल की टीम में आपको different responsibilities दे दी. That you will be a goalkeeper, you will play the forward, you will play in the center. So therefore, different abilities के basis पे हमने different responsibilities provide कर दी. Right? So similarly, in multicellular organisms also, based upon different specific abilities of the cells, we give different functions are performed. So group of cells, they come together, they make tissue. Group of tissues come together, they make organs, and then made up of organs, all of these organs are connected via blood vessels, and they perform the
whole function. So this function is performed by, so this becomes a complete organism. Now ये तो बात हो गई एक मल्टी सेलुलर, इसमें आप डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं, बट there is a division of labor in this within a single cell also. So now we said a multicellular organism or a unicellular organism, the fundamental unit is cell, fundamental unit of life is cell, but within cell also there is a division of labor. There are multiple different cellular organelles. Now these different organelles perform different functions. So each cell has got certain specific components within it. It is known as cell organelles. Now इनका क्या क्या फंक्शन हो सकता है? कोई किसी एक का फंक्शन है that it is making new material, because you need every time you need new material to synthesize various कंपोनेंट्स इन द सेल. अगर सेल्स को डिवाइड करना है तो सेल तो अगर अपने मटेरियल तैयार नहीं करेगा तो वो डिवाइड करेगा तो सारा मटेरियल जो एक सेल में लग रहा है वो दो में लग जाएगा, बट जाएगा ना. सो इट हैज टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन ऑल्सो, टू परफॉर्म फंक्शंस ऑल्सो, टू सो देयरफॉर न्यू मटेरियल्स नीड टू बी सिंथेसाइज्ड नाउ. और उसमें क्या होगा, बिकॉज एवरी सेल इज जनरेटिंग एनर्जी फॉर इटसेल्फ, वो एनर्जी कंज्यूम भी करता है. जब एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो वेस्ट मटेरियल भी जनरेट होता है, सो वो क्लियरिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल विल आल्सो बी रिक्वायर्ड, सो दैट फंक्शन इज आल्सो परफॉर्म्ड. नाउ जनरेशन ऑफ एनर्जी, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर there. So there are multiple organelles inside a cell. For example, there is an organelle which is known as plasma membrane or cell membrane. So this is the outer covering, outer circumference of the cell, which is a plasma membrane. It has a lot of proteins and lipids present on the plasma membrane, which takes care of what is coming inside, what is going outside of the cell. Now there is something known as nucleus. इस nucleus में DNA होता है. So this is one of the major organelles of a cell. Then there is mitochondria. Without mitochondria, energy will not be generated, respiration will not occur. So mitochondria is very, again, important organelle of a cell. Then there is cytoplasm. A lot of reactions occur inside a cytoplasm, a lot of protein synthesis occur inside a cytoplasm. So cytoplasm is the largest component of a cell. So, and it is found that all cells are found to have same organelles. So चाहे कोई भी सेल हो उनमें सेम ऑर्गेनल्स होते हैं. ये तो होते ही होते हैं, इनके अलावा और भी होते हैं. गोल्जाई अपैरेटस होता है आपके, और डिफरेंट न्यूक्लियोलस होता है. सो राइबोसोम्स होते हैं. सो देयर आर डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड अ सेल, बट व्हाटएवर द सेल मे बी, व्हिचएवर ऑर्गेनिज्म, all the organelles of a cell remain the same. So उस सेल, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात करी, इट कैन बी नर्व सेल, इट कैन बी रेड ब्लड सेल, इट कैन बी लिवर सेल, इट कैन बी हार्ट का सेल, इट कैन बी किडनी सेल, इट कैन बी मसल सेल. Whatever that cell is, whatever that function of cell is, whatever the shape of that cell is, whatever the origin of that cell is, it doesn't matter. All the organelles are same, or same in every kind of cell, right? So now this is very important from your exam perspective. You can just have a look, you can take a screenshot of it or take a picture of it. So we'll recap what happened is, who discovered the cell? Robert Hooke in 1665. Discovery of living cell. Remember, Robert Hooke did dead cells. कॉर्क जो थी वो प्लांट की ब्रांच है, तो डेड सेल थे. लिविंग सेल जो सबसे पहले देखे वो एंटवन ल्यूवेनहूक ने देखे. देन हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? वी जस्ट डिस्कस. It was done by Robert Brown. Then ये जो वर्ड है प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, who coined this term? This term was coined by a scientist known as Purkinje in 1839. Now then came a theory which is known as cell theory, that every living organism is made up of cells and every cell comes from a pre-existing cell. मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो सेल का बना होता है. एंड एवरी सेल, हर सेल एक उससे पहले जो सेल है उसी से आएगा, अपने आप से कहीं से जनरेट नहीं हो जाएगा वो सेल. सो अ सेल विल कम फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल एंड every living organism is made up of cell only. So this becomes your cell theory.
Okay, so this was given by two scientists, Sheldon and Swan, in 1838, 1839 के करीब. Then came somebody known as Rudolf Virchow. This was a scientist, Rudolf Virchow. He expanded upon this cell theory in 1855. Okay, so this becomes your tabular form of way the discoveries in the cell theory or the cellular biology have occurred. So you can just have a look at it, take a screenshot of it, and then we'll discuss it in the next part of this same chapter. Whatever questions you might have, please put it in the comments. कितने भी क्वेश्चंस हो डजेंट मैटर, बट यूज वन कमेंट ओनली. अगर आपके पास 5 क्वेश्चन है तो उसको सीरियल नंबर करके उस कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. आई विल आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, ऑल ऑफ द कमेंट्स. लेकिन जस्ट ट्राई टू मेंटेन दैट यू आर आस्किंग विद इन दैट one comment box only, so that a organized system or a systematic answers can be given to each and every comment which comes across. If you want that any part which you think that needs to be repeated, or you want to specially cover, I will do that. Just put your request in the comment box. We'll do that in the next part. Very soon, in the next 2 days, we'll be posting the part 2 of this same chapter, and with the part 2 we'll be completing this chapter, fundamental unit of life. Thank you.